हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नक्स। आज मैं आपको हमने मैथ में वन विच नंबर्स हमने ये किया था, तो ये हम आज करेंगे। ये अधूरा था हमारा, हम आज हो सके इतना करेंगे। ओके, तो ये क्या तक ये हो गया था, काउंटिंग इन 100 हो गया था एंड 50 बाकी रह गया था। ओके, तो यहाँ पर लिखा है काउंटिंग इन 50s, काउंटिंग इन 50s। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर 100 के लिए है ना, सॉरी यहाँ पर हमने 10 लिए है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा नहीं, आपको 5 करना है। ओके, तो हम लिखेंगे जो 200, 250, 250 एंड फिर 300। Answer is 300. 300. फिर इधर 350 फिर 50 फिर 400, 400 के बाद 450। ओके ना, फिर 500 ये हमने दिया हुआ है, 550 तो 650 है, तो 600। फिर 650 तो फिर 700 जाएगा, 700 गुड, 700। फिर 750 सॉरी 750 के बाद 800, यहाँ पर हम 800 ये हमने कर दिया। ओके, अब ये है कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, तो हम हाईलाइट how far can you go like this? How far can you how far can you go like this? You go like how far can you go like this? Okay, तो यहाँ पर है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स है, तो यहाँ पर हम आंसर्स का लिखेंगे। आप कहीं पर भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह है तो आप लिखे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ये है हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस, आपको कितना बार जाना पसंद है। तो यहाँ पर we can go no sorry on and on and on
no end to this number. हाँ सॉरी, ये यहाँ पर ये पूछा है कि ये नंबर की आंसर है because there is no and who is number is number. यहाँ पर हम फुल स्टॉप कर लेंगे। ये उसका दिस इज आंसर। हाँ फिर ये दूसरा है what the biggest number you can call out? The answer ये मैं नीचे लिखा हूँ वो आंसर है। ओके there is no biggest number and hence we cannot hold that number. We cannot hold that number. ओके तो ये हम कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप फुल स्टॉप। तो हम यहाँ का आंसर रीड कर लेते हैं। How far can you go like this? We can go on n on because there is not n to this number. What is biggest number you can call out? There is no biggest number and hence we can call out. Okay? हाँ अब ये color the numbers. यहाँ पर कलर करना है नंबर्स को। ओके तो ये एक्टिविटी है। फिर यहाँ पे ये आपको कलर करना है। फिर यहाँ पे लिस्ट दी गई है, इस हिसाब से आपको कलर करना है। ओके हाँ अब ये है ग्रीन कलर के यहाँ पर ये नंबर है वो आप कलर कर सकते हो। तो 140, 202, 261, 800। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन सॉरी ये यहाँ पर हमको ये बताया नहीं है, यहाँ पर प्लस करना है हमको। तो हम यहाँ पर करते हैं 300
300 plus 70 plus 4, हाँ 370, 300 में आप 300 में आप 70 ऐड करिए, यानी कि 370 में 4 यानी कि 3 इक्वल 370, 1 second, हाँ 374, ओके ये है, ये आप यहाँ पर आपको सोल्व करना है। फिर ये 60 आप ऐसे कर सकते हैं, ये हमारी, तो ये है 60, ये यहाँ पर क्वेश्चन है, वहाँ आप इस हिसाब से कलर कर लेंगे। तो ग्रीन में रेड में है, रेड में है भाई 54, 60, 100, 195, 555, यहाँ पर ये 3 है क्वेश्चन। येलो में है, ओके येलो में 445, 16, 159, 685, 60 plus 9, 70 plus 4, वो आपको करना है, ओके हाँ ये यहाँ पर एक जरूर बात है कि हमको या jumping animals, कैसे एनिमल्स, jumping animals की स्पेलिंग JUMPING animals, यहाँ पर कुछ लिखा है, ओके Gabra, bunny and Taru and jumping all the way. Gabru jumps on every 7th box, on every 5th, okay, 5th box, okay, so Taru on every 4th box. Gabra starts jumping from 90, where Bunny starts jumping 99. Taru starts jumping 106. Taru start jumping is 106. Okay. इधर से ओके ना? सॉरी हम हाँ इधर से 106. अब ये देखो यहाँ पर समझो कि जो ये गबरू है, गबरू कौन है? डियर, वो 7 का जंप लगाता है, कितने का? 7 का। तो बनी है, बनी जो है